idiom is let's see. Sir has come. Good afternoon, sir. Complete this idiom. Okay. Let's see which Good way afternoon. the wind blows. Wind blows. Wind, Wind. 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 W-I-N-D. Oh, Wind. sorry, हम Wind. हमेशा ही wind बोलते हैं. Wind Winds. blows. Winds blow. चलो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है. Let's see. Let's see which way the wind blows. 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 You did not tell the meaning of drop in sometime come over one day. नहीं, किसी दिन घर आइए ना. I said. Okay, okay. Okay भाभी, है ना. चलो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है. For this purpose, ladies, I can do one thing. I have a well-maintained register of a very senior student of mine. I will take a photo and I will send you, but sequence can be different. Thank you, sir. Thank you And so do much. not and do not match this idiom, this interactive. Do not match it. You will get interactive separately. You will get idioms separately. And in this pretense, you will get some new interactives. And while the class, you can ask me, which are not given in this notes. Uh, Today, I'm not giving you interactive idiom. Uh, Ritu, can you tell me what was the last sentence? Sir, last sentence was he is going bald. No, it is interactive sentence. Okay, Sarika, can you tell me? Yes, sir. It has been raining continuously for last 4 days. Here, one interactive is written. Please check it. It is given it to you completely or not. Yes, sir. You have already given. It doesn't matter. Never mind. Not at all. Yes, sir. Guys, please turn only one page and write down the next heading. You can write on the left page or right page, whichever you want. Because I'm not going to give you so many sentences in present perfect continuous tense. Now let me ask this question to Poonam. Poonam, what should be the next heading? Sir, come again, sir. What should be the next heading, Poonam? The next heading should be future perfect continuous tense. Aparna, can you tell me? So the next heading should be past perfect continuous. Please write it down. This is coming on your CC, past perfect continuous tense. Renu, what should be the first point? Sir, the first point should be identification. Absolutely correct. Ask the next related question to Ritu. Ritu, what is the identification of past perfect continuous tense? Is wrong. Listen, ladies, I use is whenever I already give you something. And I What have not given you, that's why guessing. Guessing means should. what should be the क्या है?
Identification of identification of past perfect continuous tense. Ritu? I think identification of past perfect continuous tense is ता आ रहा था, ते आ इस रहे थे. ऋतु इस नहीं बोलते बेटा, इस तो तब जब कोई चीज दे दी गई। Identification of past perfect continuous tense ता आ रहे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे. ओके ऋतु, आज द सेम क्वेश्चन टू पूनम। Poonam, what should be the identification of past perfect continuous tense? The identification of past perfect continuous tense should be रहा था, रहे थे, रही थी. आज द सेम क्वेश्चन टू अपर्णा, पूनम। Aparna, what should be the identification of past perfect continuous tense? Poonam, the identification of past perfect continuous tense should be समय से डैश 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 रहा था, रहे रही थी, रहे थे. समय से. Sarika, what should be the second point? The second point should be the formula. Ritu, what should be the formula of past perfect continuous tense? The formula of past perfect continuous tense should be subject plus had been uh, plus V1 plus ing plus uh, object plus extension. Now, Sarika, you can start making any sentence with I. I had been waiting for uh, to meet my cousin since 2 o'clock. मैं अपने कजिन से मिलने के लिए 2 बजे से वेट करती आ रही थी. Sarika, your sentence is little wrong. Please come again. Okay. So should I change the sentence कि I had been waiting अब यहाँ पे to meet फेविकोल लगा और दूसरी क्रिया लगा तो सही हो जाए। जी I had been waiting to meet my cousin for 2 o'clock. Sorry, since 2 o'clock. Since 2 o'clock. हाँ जी, मैं अपने कजिन से मिलने के लिए 2 बजे से इंतजार करती आ रही थी. कर रही थी। कर रही थी, हाँ कर रही थी जी. अपर्णा दी. I had been uh, I had been looking for this. I had been watching this movie for 2 hours. मैं यह पिक्चर 2 घंटे से देख रही थी. बट आई डिड नॉट गेट दैट सीन. पर मुझे वो सीन नहीं दिखा. कुछ भी. रीनू भाभी. I had been working in the kitchen from since morning. Article, lipstick. I had been working in the kitchen
kitchen since morning. Since morning. Since the morning. Since the morning. The morning, the afternoon, the evening, at night. Okay. I had been working in the kitchen since the morning. Poonam. I had been learning English for 2 months. मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी. ऋतु. He had been living there for 10 years. वह वहां 10 साल से रह रहा था. Is it okay? It is okay, but I think you do not listen the things carefully. I instructed to use only I subject. Rest Okay. of the ladies made the sentences I with had been living there there. is no harm. There is no harm, but I'm just complaining that you do not listen carefully. That's all. No problem. Sentence was correct. Guys, write down the first sentence. यहाँ पिछले 2 घंटे से लगातार पानी बरस रहा था. It is a similar sentence, Sir, but please not. come again, sir. Please come again. यहाँ पिछले 2 घंटे से लगातार पानी बरस रहा था. यहाँ पिछले 2 घंटे से लगातार पानी बरस रहा था. जो सबसे पहले फ्री हो जाए लिख के प्लीज स्पीक इन दिस सेंटेंस. यहाँ यहाँ पिछले 2 घंटे से यहाँ पिछले 2 घंटे से लगातार पानी बरस रहा था. Ladies, do you remember who made the last sentence yesterday? Sir, I made the last sentence. Yes. And whose go is this? I think nahi, after me, I made the Reenu last bhabhi. sentence. Di. Reenu bhabhi. It has been raining, na? I made that sentence. So whose go is this, Sarika? Sir, it's Aparna Didi's go. Okay. Yeah, it's mine. To make this sentence belongs to past perfect continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the introductory subject, and the introductory subject is it. कठिन है रे बाबा. It. It. Uh, Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is had. Uh, it. Helping verb नहीं आएगा. It had. Come again with confidence. There is a minor mistake in the description. Okay. Firstly, I will take the subject, and the subject is introductory subject is it. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is had. This description is still wrong. Okay, sir. Later on, I will take the helping verbs, and the helping verbs are had been. Please repeat later on. Later on, I will take the helping verbs, and the helping verbs are had been.
Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is water, rain. Then I will add the ing with the rain. Later on, I will take the object, and the object is its object name. क्या आएगा? Ritu, mute yourself. Thank you. Adverb, and the adverb is constantly. Thereafter, I will take the preposition, and the preposition is for. Then I will take the time, and the time is 2 hours. And the end of the sentence, I will put the full stop. And the sentence is constant, continuously. It had been raining constantly for 2 hours. What is the Hindi sentence, Aparna? Tell me. Yeah, over here. And the last, I will put the extension, and the extension is over here. And the end of the sentence, I will put the full stop. Repeat the Hindi sentence, please. यहाँ पिछले 2 घंटे से पिछली लगातार 2 घंटे पानी से बरस रहा था. It had been raining constantly for 2 hours over here. गलत है कुछ. Does anybody think that she can change the sequence of the words? Yes, Yes, sir. sir. Renu? Sir, before continuously here आएगा बस. नहीं. बताओ. Sir, can I? It had been raining here continuously for last 2 days. Last 2 hours. 2 hours. Okay. it had पिछले Renu, पिछले Renu, mute yourself now. I'm giving the chance to Ritu, later on Sarika. Sir, it is minor correction. Last 2 hours. Okay, Sarika. should I make fully sentence? Okay. Full sentence. Should I make full sentence? So that I can understand. Okay, sir. Okay. This sentence belongs to पूरा past जैसे ही। perfect continuous tense. केवल बोल दो No. पूरा। Okay. It had been raining continuously here for last 2 hours. Poonam, speak this sentence and translate. It had been raining continuously here for last 2 hours. Renu? It had been raining continuously here for last 2 hours. Ritu? It had been raining continuously here for last 2 hours. Appu, Aparna. It had been raining continuously here for last 2 hours.
all are done. दोस्तों, continuously or constantly is adverb, as you know. Now you have better understood that ly means adverb. So this adverb, यानी क्रिया विशेषण, is showing the speciality of this क्रिया. Raining continuously. तो लगातार पानी बरस रहा था. So next question comes in mind, कहाँ? So the answer is here. अच्छा, कब से? पिछले 2 घंटे से. कभी अगर ऐसा भ्रम हो कि शब्दों का क्रम क्या हो रहा है, तो मन में खुद से सवाल कीजिए. आपको याद होगा एक आध बार मैंने पहला सेंटेंस बना के बताया था अनुवाद से बाहर निकालने के लिए कि कल मैं अपने बॉस के साथ महामाया से दिल्ली जा रहा हूँ. अगर याद हो तो. पता नहीं इस बैच में किया कि नहीं, दूसरे बैच में रिकॉर्डिंग दी है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया आई, हेल्पिंग वर्ब ली एम, मेन वर्ब ली गो, आईएनजी लगाया, आई एम गोइंग. अब क्या लगाएं, बहुत सारे शब्द बचे. तो सवाल खुद से कर लो. आपने किसी से बोला आई एम गोइंग, तो वो सीधा सवाल करेगा कहाँ? आई एम गोइंग टू दिल्ली. अच्छा, किसके साथ? विथ माई बॉस. अच्छा, काय से? बाय महामाया, बाय गरीब रथ, बाय नंगा कावेरी, ब्ला ब्ला. तो आप खुद से सवाल कर लो, आपको शब्दों का सही क्रम खुद से पूछने पर ही नजर आ जाएगा बहुत जल्द. क्योंकि सुपर फॉर्मूला में तो 4 चीजें तो कांस्टेंट है कि भाई सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी. सॉरी, 3 चीजें तो सीधे सीधे आएंगी. उसके बाद अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करें, एक्सटेंशन क्या है, कैसे पता करें. और आखिरी में फिर लगाइए टुमारो, एक्सटेंशन. कल मैं अपने बॉस के साथ गंगा कावेरी से दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ. ओके, अगले सेंटेंस में अपन और देखते हैं कुछ नई चीज. हैव यू रिटन? Yes, Yes, sir. sir. Poonam, you were saying something to me? Okay. Poonam, were you saying anything? No, sir. Okay, so write down the next sentence, ladies. यार, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? यार, जिसमें आप भी बहुत अच्छे हैं. तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ब्रैकेट में लिखिए क्रोध में, या सरल भाषा में लिख लीजिए गुस्से में. और मैं गुस्से में बोल के बता भी दे रहा हूँ, यार क्या कर रहे थे इतनी देर से? Aparna made the previous sentence. So according to the sequence, who is the next? Renu. Sir, this sentence belongs to present perfect continuous tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take क्या बोलेंगे उसको, introductory word, and the introductory word is hello. Just a minute, Renu. Let me confirm with the other ladies. Can anybody tell me what can we call this word yaar? Sir, buddy. Hey, buddy. No. Sir, Pranav. I'm not asking Addressing. about the word. Addressing word. Addressing word. No, it is not addressing.
Aparna, would you like to say Poonam, Ritu? Sir, dear. Mm, Sir, dear will do. Order. दोस्तों इसको exclamatory. कहते हैं exclamatory word. Exclamatory It's so ना. difficult to pronounce. Spelling is on your exclamatory. screen. Exclamatory. विस्मयादि बोधक शब्द. हाँ. विस्मयादि बोधक शब्द. Exclamatory word. The spelling is on your screen. हाँ. Exclamatory word. Uh, Firstly, I will take the exclamatory word, and the exclamatory word is yar. Then I will take the WH word, uh, and the WH word is what. Then I will take the helping verb. Um, what what you. Huh. Then I will take the subject, and the subject is you. What you had been. You. Then I will take the helping verb, and the helping verb are had been doing. Then I will take the first form of the verb, and I will put ing. Do, doing. Uh, what are you doing since now? You What are wanna you? say something? Hmm? Poonam It is unmuted herself. That's why I'm asking. Poonam unmuted herself for a second. Sorry, sir. Okay, it was unmuted by mistake. No problem. So should I try? Yes. Uh, so I had to make this sentence, and this is an WH sentence. This sentence belongs to past perfect continuous tense. Firstly, I will take the exclamatory word "yar." After that, I will take the WH word "what." Later on, I will take the first helping verb "had." Later on, I will take the subject "you." Later on, I will take the second helping verb "been." Later on, I will take the first form of the verb "do" plus ing, doing. Later on, I will take the time for long time, for a long. So and then I will put the question mark. So the complete sentence should be, "Yeah, what had you been doing for a long time?" Very nice. Very nice for first helping her. But Renu, it is still not up to the mark. Let me try somebody else. Who is ready now? Ritu? Sir, I am ready. Yes, sir. I have to make that sentence. That sentence belongs to present perfect continuous tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the exclamatory word, and exclamatory word is "yar." Then I will take the WH word, and WH word is "what." Then I will take the first helping verb, and the first helping verb is "had." Then I will take the subject, and the subject is "you." Then I will take the second helping verb. Second helping word is "been." Then I will take the first form of verb, and the first form of verb is "do."
plus then I will add ing in it. So then I will take the word for, and then I will take the object, and the object is long time. So sentence is फॉर का कोई yeah. नाम बता देती रितु तो खुशी होती। Sorry. फॉर्मूला देखो, फॉर का नाम वहाँ लिखा नहीं लिखा है, लेकिन सारिका ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। और सेंस ऑफ फॉर है क्या? कल भी अपन ने देखा। yes sir. ये तो मदद करते हैं। Time sir. ये दोनों प्रपोजिशन है बेटा। हाँ, okay sir, sorry. So lastly I will put for a long time. Lastly I will put the question mark, and in the bracket I will take the angrily. So अब जहाँ sentence is, सेंस फॉर लिखा है ना बेटा, उसके what ब्रैकेट you been प्रपोजिशन लिख लो जिसको लिखना हो अपने लिए। जहाँ सेंस फॉर लिखा है ना फॉर्मूले में, उसके नीचे ब्रैकेट में थोड़ी सी जगह हो तो PREP लिख लो डॉट लगा के, ताकि बोलते समय तुम उसको सही नाम से पुकार सको। इट so वाज नाइस। sentence is, yeah, what had you been doing for long time? ओके नाइस। नाउ it's still not up to the mark, so I'd like to invite Aparna. Sir, I have to make this sentence. This sentence belongs to past perfect continuous tense. It is a WH sentence. Firstly, I will take the exclamatory exclamatory word, and the exclamatory word is "yar." Then I will put the exclamatory mark. Later on, I will take the WH word, and the WH word is the what. Nay, WH word is what. Then I will take the first helping verb. First helping verb, and the first helping verb is head. Then I will take the subject, and the subject is you. Then I will take the second helping verb of the past perfect tense, and the verb is been. अगर तुम नाम बोल ही रही हो टेंस का तो पूरा बोलो, तुमने पास परफेक्ट बोला है पढ़ना। Perfect continuous tense. जरूरत तो नहीं है वैसे उसकी। Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is do. Then I will put the ing, and the word is doing. यार तुम इतनी देर से क्या? And the last I will put the question mark. Sometimes your voice was not clear, Aparna. You should speak up next time. Okay, sir. Can I change the after putting what? I will take the another what for. No. What for had you been doing? No, I'm quitting and around and goes to Sarika. Sarika? हाजिर हो। Okay, sorry. I was mute actually.
This sentence belongs to past perfect continuous tense and it is a WH sentence. Firstly, I will take the exclamatory word and the exclamatory word is yar. Later on, I will put exclamatory sign here. Thereafter, I will take the WH word and the WH word is what. Thereafter, I will take the first helping verb and the first helping verb is had. Later on, I will take the subject and the subject is you. Thereafter, I will take the second helping verb and the second helping verb is been. Later on, I will take the first form of the verb and first form of the verb is do and I will put ing with the do. So word is doing. Later on, I will take the preposition and the preposition is for. Lastly, I will take the time and time is a long time and I will put question mark at the end of the sentence and sentence is yaar what have you been doing for a long time. Okay, well tried, Sarika, thank you. But still, the sentence is not up to the mark. Should I give you a little bit time to rethink? Sir please So tell us na. maybe for मतलब इतनी देर से फॉर सो लॉन्ग ऐसा कुछ आना चाहिए फॉर सो लॉन्ग लास्ट Okay, well tried, well tried. वर्ब के बाद सर ऑब्जेक्ट आएगा ओ देयर ओवर देयर So what were had you been? No. Sir, how long had you been? How long had you been doing? How long had you did? यार what had you been doing so long no Sir, it's your go. Okay, thank you. Oh, Oh, what the hell. angrily बोला था ना. Yes. What the hell had you? Yaar, what the hell had you been doing for a long time? Hey, what the hell had you been doing for a long time? This is not a question, Sarika.
Okay, sir. Same thing. I have to speak same sentence or with creativity. हाँ, creativity is always free. ओके, फिर क्रिएटिविटी करेंगे तो आंसर बोलना पड़ेगा ना. क्रिएटिविटी करेंगे तो आंसर मतलब आई हैव टू चेंज द मेन वर्ब ना. ये प्रश्न तो है ही नहीं, तुम्हें इसमें कुछ करना है तो जैसे हम किसी से बोल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, क्या कर रहे थे यार इतनी देर से, हैं? What the hell had you been doing for a long time? तो अब तुम्हें कोई करना है तो कर लो, वर्ब चेंज कर सकती हो या कुछ और, क्या करना मीनवाइल चाहिए? कैन आई ट्राई? जी सारिका मैम, जी. हाँ. मीनवाइल कैन आई ट्राई? ओके, नो प्रॉब्लम. बस बट ओके, नो प्रॉब्लम. आफ्टर यू. Jimu, yeah, what the hell had you been doing for a long time? You have not completed your meal. जीमू, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? तुमने अभी तक अपना खाना नहीं खत्म किया. ओके. सारिका, यार, what the hell, what the hell had you been painting for a long time? यार, तुम इतनी देर से क्या पेंट कर रहे थे? रेनू भाभी. Soumya, what the hell had you been making for long time? सर मेरे को वो टी टी के लिए बोलना था, पर टी कहाँ फिट होएगी? What the hell had you been preparing tea? पूरे सेंटेंस बदले कर रेनू, हाँ वही तो, इसमें फिट नहीं होगा. ओके. या फिर अगर केवल चाय को रखना ही है हम्म. तो आखिरी में एक सेंटेंस रखना पड़ेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ योर डॉटर? सौम्या. Soumya, what the hell had you been doing for a long time? Where is the tea? I was waiting for the tea. ऐसे रखना पड़ेगा. ओके सर. रितु. यार, what the hell had you been correcting for a long time? यार, इतनी देर से क्या ठीक कर रहे हो? पूनम. You have not learned all that lessons. What the hell had you been learning for a long time? तुम्हें अब तक ये लेसन याद नहीं है, तुम इतनी देर से क्या याद कर रहे थे? Okay, sir. What the hell had you been doing beta for a long time? You have not selected a single outfit? Going to trial room again and again, trying this, trying that, trying this, trying that. You have not selected single outfit. What the hell had you been doing? can I make one more sentence? What the hell? What the hell had you had the government? नहीं, in government of नहीं. What the hell had what the hell had in government office been going on for a long time? A red taped ऐसे कुछ है ना, red taped is going on. सरकारी ऑफिसों में क्या चल रहा है इतने दिनों से, जब से रेड लाल फीता शाही चल रही है और कुछ नहीं चल.
Sir, जो one अगर more should. Uh, what the hell had you been doing for long time, Shubham? You have not filled the form yet on computer. तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक फॉर्म नहीं भरा कंप्यूटर पे. सारिका. सर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो बना सकते हैं ना, सेम ही, व्हाट द हेल, व्हाट वर यू डूइंग. तो फिर हम केवल टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं क्योंकि हमें टाइम शो करना रहता है, कि हम एक्चुअली ऐसे भी बोल सकते हैं. कुछ नहीं, अचानक ये सेंटेंस आ गया और हम चेक करना चाहते थे कि व्हाट द हेल नाम का इंटरेक्टिव तुम लोग को दिया है कि नहीं, और अगर दिया है तो याद है कि नहीं. इसलिए हमने ब्रैकेट में एंग्रीली, गुस्से में लगवा दिया था कि भैया आप ये वाक्य गुस्से में बोल रहे हैं, आप गुस्से में कैसे बोलोगे. तो चेहरे पे तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन लैंग्वेज में, अब लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में तो गुस्सा ऐसे शब्दों में आ जाता है, कहा कर रहे हैं, तो इसमें गुस्सा दिखाई दे रहा है. लेकिन किसी नॉवेल में अगर लिखना है किसी चीज को, तो वो ऐसे लिखा जाएगा. भाई नॉवेल में गुस्सा कैसे प्रकट करेगा, वहां तो न तो वॉइस है और न ही एक्सप्रेशन है, तो फिर इस तरह से वो प्रकट करते हैं स्टोरी में, नॉवेल में. वैसे ये पास्ट कंटिन्यूस में बहुत अच्छा बनता है, व्हाट द हेल वर यू डूइंग यार. तो हम क्या करते हैं, जो चीजें दी हैं उनको चेक करने के लिए अचानक कोई भी सेंटेंस कर देते हैं. तो अभी कंफर्म हो गया, द हेल तुम लोग को मिला तो है, हु द हेल आर यू, व्हाट द हेल आर यू मिला तो है, याद नहीं था. तो अब वो रिमाइंड हो गया. अब तुम लोग लगाओगे तो सही जगह लगाने लग जाओगे. सेंटेंस ऐसा प्रैक्टिकली बनता नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है. यार पप्पू व्हाट द हेल वर यू डूइंग, पप्पू कर क्या रहे थे यार. तो बनता तो ऐसे ही है, क्योंकि गुस्सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में इजीली प्रकट हो सकता है. यार व्हाट द हेल आर यू डूइंग, कर क्या रहे. अब उसके आगे लगा दो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, या आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम घंटा भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम कर क्या रहे. तो ये एक्सप्रेशन केवल एक सेंटेंस में नहीं, हमें कई बार दो सेंटेंस व्यक्त करने के लिए लगा. तो वो पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में खूबसूरत लगता है. इतना टफ प्रैक्टिकल है नहीं, केवल याद दिलाने के लिए बना दिया था. अब चलो एक थोड़ा सा साहित्यिक सा वाक्य लिखो, प्रैक्टिकल भी है. राष्ट्र पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष मना रहा था. सर प्लीज कम अगेन. राष्ट्र पिछले एक महीने से, यानी एक एक पखवाड़े से एक पखवाड़े से महिला दिवस मना रहा है. महिला वर्ष, बेटा दिवस तो नहीं मनाएंगे. ये देखिए, सॉरी हमने बिना कैमरा ऑफ किए उठा लिया है ट्राइपॉड को. मना रहा था. राष्ट्र पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष मना रहा था. मान लीजिए 1921 को महिला वर्ष घोषित किया गया, या 1987 को किया गया था कि भाई ये महिला वर्ष है. साल भर महिलाओं के से रिलेटेड हर ऑफिस में उनके सम्मान के लिए या उनके बेटरमेंट के लिए कार्यक्रम चलेंगे. इस वाक्य में हम आप लोगों को एक तो जानकारी से भी परिचित कराने जा रहे हैं. हाथ उठाइएगा, पखवाड़ा शब्द किस किसने पहले सुना है. मैंने सुना है सर. सर मैंने सुना है. तो जिसको नहीं पता था आज उसको पता हो जाएगा, है ना. Sir, पखवाड़ा मतलब 1 quarter. I'm guessing. I don't know. नहीं, अभी जिसकी बारी है अपन महीना. उसको पहले, जिसकी बारी है पहले उससे देखते हैं. Whose go is this? Whose go is this? This is mine. Ritu.
Poonam, are you making? लास्ट टाइम मैं नहीं बना पाई थी, मैं बनाऊं? No, it's सेंटेंस बहुत सरल है, एक ही शब्द, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके पूनम, आफ्टर यू। tu or me. Who is making this? According to sequence, do you not remember yesterday what Sir, Ritu. sequence Now it's Ritu's go. it is? I have to make that sentence. That sentence belongs to present perfect continuous tense. That is an affirmative sentence. Firstly, I will take uh, the word nation. Sir, I don't know what to say. The nation. राष्ट्र। राष्ट्र नहीं, राष्ट्र को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हाँ, अब एक शब्द बताओ, एनीबॉडी हेल्प हर। सब्जेक्ट। Subject. Firstly, I will take the subject, and the subject is nation. थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दो। The nation. Firstly, I will take the subject, and subject is the nation. Then I will take the helping verbs, and the helping verbs are had been. Then I will put the first form of verb, and the first form of verb is celebrate. Then I will put the ing in it. So word celebrating. Uh, then I will take the महिला वर्ष. सर महिला वर्ष को एज इट इज ले सकते हैं? पहले बेटा उसका नाम बता दो ना, जैसे तुमने इसका नाम बताया सब्जेक्ट, इसका हाँ. नाम बताया हेल्पिंग वर्ब, Then I इसका will take the object here. Then object is महिला वर्ष. Oh, sorry, women's here. Then lastly, I will put the full stop. सेंटेंस पढ़ो बेटा, गलत तो नहीं लिखा है तुमने? The nation had been celebrating. नहीं, sorry, अभी complete नहीं हुआ सर. For then I will take the preposition, and preposition is for last month. Then I will put the time and last month, last year. अब जिसको पता है पखवाड़े का अंग्रेजी शब्द बता दे प्लीज। लास्ट Month. फोर्टनाइट। अच्छा, fortnight. For the last fortnight. So sentence is the nation had been Fortnight or celebrating fortnight? I think I was month pronouncing year last fortnight. 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 सर मीन्स 4 महीने ना? 15 दिन। दोस्तों हिंदू अच्छा, कैलेंडर हाँ में हाँ, दो 15 दिन, हाँ. fortnight होती है, एक कृष्ण पक्ष कहलाता है, एक शुक्ल पक्ष। जी जी जी. कृष्ण पक्ष यानी जिसमें चांद दिखता नहीं, अंधेरा छाया रहता है, इसलिए कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष यानी उजला, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश फैला रहता है। दो पक्ष माने जाते हैं। तो इसी तरह अंग्रेजी कैलेंडर में दो फोर्टनाइट्स होती हैं। हमारा एक दोस्त था कि जो सहारा में काम करते थे, तो फालतू तो घूमते रहते थे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, किसी के साथ भी कहीं पे भी चले गए। तो एक बार उसके ऑफिस में गए तो देखा लिखा हुआ था, पढ़ने की आदत शुरू से थी,
कि दिस फोर्टनाइट, वहां पोस्टर लगा था, द विनर्स ऑफ दिस फोर्टनाइट, और सबके नाम लिखे थे, जिसने ज्यादा काम किया था, खूब पैसे जमा किया था सहारा में, उनके नाम लाइन से लिखे हुए थे, द विनर्स ऑफ दिस फोर्टनाइट। तो हमने पूछा था क्या मतलब होता है यार ये फोर्टनाइट, तो उसने बताया ये होता है 15 दिन। वो पखवाड़ा शब्द नहीं बता पाया। तो फिर हमने क्या किया, पूरे समय नजर रखी और हमें एक अखबार की कटिंग में, विज्ञापन में, हिंदी अखबार में दोस्तों, ये क्या लिखा पढ़ के बताना सारी। पंजीयन पखवाड़ा। पंजीयन पखवाड़ा। तो अब इसमें वो क्या कर रहे हैं, कब से है, दिनांक 1 तारीख से 15, यानी 15 दिन का रहता है 2014 का। अरे हाँ हाँ, एक ही दिन में मिल गई रजिस्ट्री, बस मैंने पूरा स्टाम्प चुकाया, सारे कागजात सही सही लगा रजिस्ट्री में, पंजीयन पखवाड़े में रजिस्ट्री कराए और तत्काल वापस भी पाए। तो ये शब्द हिंदी में तो आपने देख लिया, पखवाड़ा। सरकार ने 15 दिन का समय दिया कि भैया अपनी रजिस्ट्री करवा लो, तो आपको ये जो लेट फीस वगैरह है वो नहीं भरनी पड़ेगी। अब ये देख रहे हैं, कैन यू सी, इज इट विजिबल? Yes, sir. Clearly visible. Tinkle. टिंकल। ये देखिए नीचे, सर स्क्रीन इज ब्लर। Fortnightly. 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 Tinkle fortnightly. अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। अखबार रोज आता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, Daily news. डेली। डेली। और जो हफ्ते में आती है पत्रिका उसको, वीकली। Weekly. और वीकली। जो महीने में आती है, Monthly. मंथली। Monthly. लेकिन उसके बीच का ये अपन कम जानते हैं, वीकली और मंथली के बीच का ये। तो कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी हैं जो हर 15 दिन में छपती हैं, उनमें से एक का फ्रंट पेज हमारे पास है, और भी हो सकती है। ये फोर्टनाइटली छपती है। फिर मंथली के बाद अपन चले गए आगे बढ़ के Quarterly. क्वार्टरली, फीस भी भरना पड़ती है। फिर Yearly. Half yearly. हाफ ईयरली। Half ईयरली, yearly. फिर Finally. फिर annually. ईयरली, ईयरली Yes. Annually. एनुअली हाँ। बोलते हैं, ईयरली की जगह एनुअली बोलते हैं, तो आजकल एनुअल शब्द चलने लगा। तो दिस इज फोर्टनाइटली। So, spelling of fortnight is FORTNIGHSNIGHT है, इसमें LY लगा, ये एडवर्ब बना है। हमने सेंटेंस में जो दिया है वो दिया night. पखवाड़ा, और ये फोर्टनाइट ली है, पाक्षिक। इसके लिए शब्द देंगे पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक। तो ये उसका एडवर्ब बन गया। फोर्टनाइट का एडवर्ब है फोर्टनाइटली। इट इज प्रिंटेड फोर्टनाइटली, पाक्षिक रूप से छपती है। इट इज नॉट मंथली, इट इज नॉट वीकली, इट इज नॉट डेली। Anyways, Renu, speak this sentence. The nation had been celebrating Women's Renu, Year sorry for to, the last Renu, sorry to disturb. Renu, who had been celebrating the Women Year for the last fortnight? So the nation had been celebrating Women Year for the last fortnight. पिछले एक पखवाड़े से कौन महिला वर्ष मना रहा था? पिछले एक पखवाड़े से राज्य राज्य राष्ट्र, महिला राष्ट्र, हाँ, राष्ट्र महिला वर्ष मना रहा था।
Okay, sir. To whom I should ask? Anybody. Okay. Who had been celebrating Women's Year for the last fortnight? Sarika. Bhabhi, the nation had been celebrating the Women Year for the last fortnight. Aparna Di, who had been celebrating the Women Year for the last fortnight? The nation had been celebrating the Women Year for the last fortnight. Poonam, who सर had been वुमेन्स आएगा कि वुमन ईयर आएगा? वुमन, विमन obviously विमेन। विमन Women. जैसे रीतु, इसको ऐसे Women. देखो, हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम जो सोच रही हो वो सही है, लेकिन हम जबलपुर का उदाहरण दे रहे हैं। कमानिया गेट, कभी कमानियाज गेट नहीं बोलते ना, कमानिया गेट वो एक शब्द हो जाता है। इंडिया गेट, अपन इंडियाज गेट नहीं बोलते, तो बीच में वो क्या लगता है, वो एक डैश सा लग जाता है, उससे वो पूरा शब्द एक माना जाता है। इंडिया गेट, कमानिया गेट। सिंगुलर प्लूरल तो नहीं सोच रहे यार, तो MEN है उसमें, वुमेन्स तो का ऐसे वर्ष, वुमेन्स ईयर ऐसा बोल रहे ऋतु, वुमन का प्लूरल नंबर विमन होता है, राइट? विमेन होता, हाँ। विमन ईयर, विमेन ईयर। महिला वर्ष। ओ विमनिया, आहा विमनिया, ऐसा करता है ना, गाना सुना है, हैव यू हर्ड? Bumania. Oh, Bumania. Aha, Bumania. विमनिया, हमें तो विमनिया बोल विमनिया भी। So who had been celebrating the Women Year last fortnight for the last fortnight, Ritu? The nation had been celebrating the woman year for the last fortnight. Complete the process. पूनम इज रेस्ट। हाँ, पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष कौन मना रहा था? और राष्ट्र पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष मना रहा था। पूनम, who had been celebrating the woman year for the last fortnight? Well, Renu, the nation had been celebrating the Women's Year for the last fortnight. Sorry, The nation had been celebrating Women's Year, द विमन ईयर, पूनम। Women women Year, year. Women Year, No, no. celebrating the Women Year for the last fortnight. Complete the process, Ritu. पूनम, कौन पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष मना रहा था? ऋतु, राष्ट्र पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष मना रहा था। Sir, whom should I ask? Sir, who had been celebrating the Women Year for the last fortnight? Well, Poonam, every government office had been celebrating the Women Year for the last fortnight. सर, पिछले एक पखवाड़े से महिला वर्ष कौन मना रहा था? हर सरकारी ऑफिस पिछले एक पखवाड़े से यानी 15 दिनों से महिला वर्ष मना रहा था, बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस वर गिवन, यू हैव टू सेलिब्रेट विमेन ईयर। गाइस, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन द बोर्ड। मैं बहुत दिनों से इस विषय पर सोच रहा था और अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं बहुत दिनों से इस विषय पर सोच रहा था और अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डैश डैश। सारिका, एक बार बोल दो बेटा। मैं बहुत दिनों से इस विषय पर सोच रहा था
और अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डैश डैश डैश। This is Poonam Sugur, right? Yes, sir. Go ahead, Poonam. So this sentence this sentence having two parts. Poonam, एक बार बोलो. This sentence is having. This sentence is having two parts. एक बार अच्छे से गिनो पूनम. This sentence is having two. Okay. Okay, go ahead. This is an sorry. This first part belongs to past perfect continuous tense. Good. The second part belongs to present perfect tense. Please come again. I could not hear because your voice was not clear. So second part belongs to present perfect tense. Absolutely correct, Poonam. Present perfect tense. Uh, this is an affirmative sentence. Which one? Firstly, I First one or second one? um, sir, first part. दोनों का अलग अलग बताओ. First one is. First, first one is an affirmative sentence. And second one is also. Sorry. Second and second one is also second one is Chahuki. Sir, Chahuki. Second one is दोस्तों मैं बिल्कुल शुरू से बोलता हूँ बच्चों से. कितना belong. भी कठिन सेंटेंस हो, डू नॉट वरी. जस्ट गीता वाला है, अपना कर्म करो. दैट्स ऑल. Sir, second part is belongs to order or request. मैंने सही बताया था पूनम. आई थिंक ये है, यू वर राइट फर्स्ट. Second one is also affirmative. Sentence is also an affirmative. Firstly, I will take the first part of the sentence. So I will take the subject. The subject is I. Let verbs, and the verbs are had been. Later on, I will take the first part of the first form of the verb think, and I will put ing along with this. So the word is thinking, thinking. Later on, I will take the object. Sorry. Later on, I will take the preposition on. Later on, I will take the preposition on. Later on, I will take the object on this subject. यहाँ दोस्तों हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न होते हैं. और इंग्लिश मीडियम वाले जिस तरह से प्रयोग करते हैं, हम कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं. बोलते समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, भले ही अभी अजीब लगे. This over it. Okay.
Later on, I will take the preposition over, and after this, I will take the object it. Later on, I will take the preposition for. What was Go ahead, Purna. Good going. for a long time. For preposition, then I will take the time, a long time. So many days. Okay. For many days. Later on, I will take the conjunction and. Later on, I will take the time. So now, now is also time. Conjunction. Okay. Now, later on, I will take the subject I. Later on, I will take the helping verb have. Later on, I will take the third form of the verb uh, come. BC, come. Later on, I will take the preposition to. Carry on. Good going. To this. Come to this. Come to this. Can be also said. Come to this solution. This, Come. I could not listen the last word, Purna. Come to this solution. Come to this. चलिए लास्ट में अपन मदद लेते हैं किसी और की. Anybody else? आखिरी का Yes, sir. मदद. हाँ. Conclusion. Come over the conclusion. Over this. Okay. Word is rest, Purna. The dash dash dash. No, Last. one word is rest. Anybody else? Sarika? That. 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 बेटा पूरे नाम से रखवाओ. Conjunction that. Been thinking over it for many days, and now I've come over this conclusion that हम इसमें कल क्रिएटिविटी करेंगे दोस्तों. आज इसको बोलना नहीं है आपको. टाइम इज अप. It's 2 o'clock. It is 5 past 2. So let's conclude the class. इसमें कल Thank you, आपको sir. ऐड करना होगा. Thank Thank you. you.